Yeah. So they might already said, Welcome to Shangrila Resort, Skardu, a paradise in the heart of Pakistan, Gilgit-Baltistan. Greetings, fellow travelers and adventure seekers. Today we embark on a virtual journey to one of the Pakistan's most enchanting destinations, Shangrila Resort in Skardu, nestled amidst the majestic Karakoram Range in Gilgit-Baltistan. As you traverse the windy mountains roads of Skardu, the anticipation builds, and the moment you lay eyes on the resort, you realize you have discovered a hidden gem in the heart of nature grandeur. Shangrila Resort Skardu, also known as Heaven on Earth, nestled amongst some of the world's highest peaks. It encircles the heart-shaped Kachura Lake, surrounded by fruit-laden orchards and flower-filled gardens. Imagine yourself gliding on a board surrounded by serenity with the grandeur of the Karakoram Mountains as your backdrop. A vacation spent at Shangrila Resort is a lifetime experience that one would want to relive again and again. Located at a height of 25,000 meters, commonly known as the roof of the world because of its spectacular beauty and breathtaking view and peaceful atmosphere. The ideal time to visit Shangrila is from March to November. The in-house attractions are Pagoda Restaurant, Lake View Rest, Rock Launch Cafe, Snack Bar, conference facilities, boating, jogging track. Also, Shangrila has elegantly furnished cottages and VIP suites dotted along the serene lake. In conclusion, Shangrila Resort in Skardu, Pakistan is not just a destination, it's an experience. A perfect blend of natural beauty, cultural richness, and luxury hospitality awaits those who seek an escape to this Himalayan paradise. Shangrila Resort, also called Lower Kachura Lake, is located in Skardu, a scenic valley having blue waters and high mountains. The distance between Islamabad, the capital of Pakistan, and Shangrila Resort in Skardu can vary depending on the route taken and transportation mode. The most common way to travel from Islamabad to Skardu is by road and air. The approximate road distance from Islamabad to Skardu is around 600 to 700 kilometers, and the journey can take approximately 20 to 30 hours depending on road conditions, mode of transportation, and stops along the way. The road journey typically involves traveling through the picturesque Karakoram Highway, passing through towns such as Jalas and Gilgit before reaching Skardu.
अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शंग्रीला रिज़ॉर्ट स्कर्दू में और ये एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, लोअर कचूरा लेक कहलाता है। स्कर्दू का जब भी आप प्लान करें तो फर्स्ट डे में कचूरा साइड का कवर करें, जिसमें आपका शंग्रीला रिज़ॉर्ट लोअर कचूरा लेक है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है लोअर कचूरा लेक और शंग्रीला रिज़ॉर्ट। यहाँ की एंट्री फ़ीस है 1000 रुपीज़ पर हेड। अच्छा, इसके बाद आपने जो दूसरा पॉइंट है वो डे 1 का बनाएं अपर कचूरा लेक, उसकी भी मैंने आगे वीडियो बनाई है। एंड थर्ड इज़ दी सोक वैली। तो सबसे पहले दिन का जब आप आगाज़ करें तो सबसे पहले आप जाएं सोक वैली। सोक वैली में अपनी गाड़ी ना लेके जाएं तो बेहतर है। इसके अलावा आपका जो है तकरीबन 1500 टू 2000 डिपेंड्स आपकी बारगेनिंग कितने करते हैं, तो उस पे आप सोक वैली जाएं। उसके बाद अपर कचूरा लेक आएँ, वहाँ पे बोटिंग जेट्स की वो करके, और लास्ट में आप रखें शंग्रीला रिज़ॉर्ट। यहाँ पे इंजॉय करें, यहाँ की खूबसूरत बोटिंग भी है। ये चेक करें, ये है शंग्रीला लेक, लोअर कचूरा लेक। ये बोटिंग, नाइट स्टे का ऑप्शन भी है, लेकिन वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं और इस खूबसूरत लेक की व्यू को एंजॉय कर सकते हैं।
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Slowly, close. Love the world, but keep the sky